We have some news coming in this morning. We're talking about the terror attack that has killed 7 migrant workers in Jammu and Kashmir. 6 migrant workers, laborers, 1 doctor have been killed in an attack. India today at the Ganderbal attack site, Jammu and Kashmir. According to initial reports, the doctor and workers attacked were part of the construction team working on the Z-More tunnel at Kinex, Ganderbal to Sonamarg in central Kashmir's Ganderbal district. We're getting in more details on that big story at this point in time. Joining us from Srinagar, Mir. Unfortunately, the terror attacks on innocent migrant workers continues. Give us a sense of what happened there. Also, how many people have been injured and how are they doing at this point in time? Well, Sneha, I am in Ganderbal and to be precise, location of this attack in Ganderbal. Now, this is a Z-More tunnel that would be or was to be commissioned in the next 10-15 days. It's absolutely complete, and this is a strategic project that is happening along with Zojila, which is again would be a path-breaking initiative as far as Ladakh is concerned. It will provide it all-weather connectivity. But it's yesterday late in the evening when mayhem broke loose. Indiscriminate fire was opened by militants towards construction workers. Now, these workers have been here from various parts of the country and were part of the making of this particular tunnel. Now, yesterday, late in the evening, when they were outside the mess, there was indiscriminate firing. And we've been told at least from 2 to 3 directions there was staccato of machine gun fire, and in this at least 12 people initially were told injured, and then news came in that 3 had expired, 3 had died on the spot, and then they told increased. Now I can tell you that 7 people have been killed in this attack. 5 of whom are said to be non-locals, which are the workers and officers of this particular construction agency. And while 1 is a local doctor, he was again a medical officer working with this particular construction agency. And 1 more person, a non-local, later succumbed to his injuries. So it is a massive attack, considering that is happening after a long time. There was a lull as far as peace had prevailed in the in the Kashmir Valley, and we had a very peaceful election process. There's an elected government now, and all of a sudden we have at least 2 attacks happening in 4 days' time. Earlier in Shopian, a laborer was shot dead while he was working in a cornfield, and now this massive big attack. And I'll also give a semblance of this particular area. As you can see behind me, this is the construction site, and then on the left side, I'll tell Tariq to show you, on the left side is the tunnel. Now this is a tunnel project that took at least 10 years to complete, and these workers were part of the making, and now it was basically the final touches that were being given, and because of elections it could not be inaugurated. But we are being told that in the next 10-15 days there would have been an event and this tunnel would have been inaugurated. But before that this incident has happened. Now the police security forces are on the spot. The DG of Jammu and Kashmir Police, IG, then senior army police officers are there, and there is a search and combing operation on right now as I speak to you. We managed to go close to that site, though it was kept away from the media. But as we went in, there definitely was a lot of tension. There was a lot of security forces around. There were searches that are happening in these barracks. Now these are makeshift barracks that are created for these workers, and it is one of those barracks that also we could see bullet marks and shattered glass. So it's a major attack, and efforts are on to track down the assailants. In fact, there was initially reports also that they could be hiding there or in some more building or in that particular vicinity, and that's why since yesterday there is a extensive and a massive search operation underway. So a massive attack, a big attack, and it has shattered the peace that Kashmir was witnessing from the last at least 1 year. Back to you. Mir, getting in those details. Mir, be with us. I'll just come back to you, Mir, from Ganderbal, telling us about that horrific terror attack. It's a deadly attack in Jammu and Kashmir. 1 doctor, 6 migrant workers killed after terrorists opened fire at a construction site in Ganderbal district in Jammu and Kashmir. Forces cordoned off the area, launching a massive counter-operation. The Home Minister Amit Shah has condemned the attack that left 7 people dead,
calling this an act of cowardice. The Chief Minister has condemned the attack on unarmed innocents as well. सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं जैसे मैंने कहा। श्रीनगर को करगिल से मिलाने वाली जोजिना टनल पर काम करने वाले कई कामगारों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। 7 इसमें जो हैं लोग जो वहां पर काम कर रहे थे वो मारे गए हैं, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। मैं इस वक्त श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाहर खड़ा हूं। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उन घायलों का इलाज चल रहा है जो इस आतंकी हमले में घायल हुए थे। अभी तक फिलहाल जो शव हैं उनको वहां से उठाया गया है, उनको दोबारा जो है अपने अपने परिजनों के पास भेजने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उस बीच जो है यहां पर उन घायलों का इलाज चल रहा है जिनको कड़ी सुरक्षा में रखा गया है ताकि वो इस बारे में किसी से भी कोई बात न कर पाए। काफी तनाव बना हुआ है कल शाम से ही पूरे जम्मू कश्मीर में, खास तौर से कश्मीर में जब से ये आतंकी घटना घटी हुई है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है कश्मीर में फिर से बनी है, अच्छी तरह से इलेक्शन हुए हैं, शायद उसी कारण से इस प्रकार से वो अपनी प्रेजेंस शो करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। तो सुरक्षा बलों द्वारा बहुत इसको पहले जो मिलिटेंसी को रोका गया है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो चिंता का विषय बन जाता है, एक बाहर के लोगों में खौफ का माहौल बन जाता है। और पिछले 2 दिनों में ये जो लगातार घटनाएं हुई हैं तो ये भी दुखद हैं। First and foremost, I think it's extremely, we must, this kind of a thing must be absolutely deplorable situation. This kind of a thing must not be permitted because this only thing happens when there is still the local support there, the OGWs over there. And especially happening at Ganderbal is extremely sad. And at this point of time, and as you rightly said, if the people there thought that it were crackers and not crackers, but someone has shot, that means it's someone amongst them. It was very much there. People know who they are. People must ensure that this kind of a thing does not happen because it is very, very challenging. At night, it is not so easy. The spate of attack as far as targeted killings are concerned continues in Jammu and Kashmir, and that is of great concern. Mir continues to be with us from Ganderbal. Mir, security analysts also talking about the role of underground workers here, saying that without the local support, this really will not be possible. Having said that, give us a sense of the investigations in this matter. Who are these people who opened the fire, the terrorists, and which group do they belong to? Well, sources in the police say that they think that it's the TRF, the Resistance Front, which is considered to be the shadow outfit of the Lashkar-e-Toiba. In fact, last night there was also a message on social media wherein the Jhelum Media House, which is considered to be the media arm of Lashkar, they announced this attack, although there was no claiming of responsibility, but then they announced that this attack has happened, and they also talked about or conveyed casualties. So that tells you that Lashkar could be behind this, but these are early days. It's a matter of investigation, and right now the first priority is to clear, sanitize the area, because if there are at least 2 to 3 militants could be behind this attack. And considering this area, I can tell you that this has been a very peaceful zone. Even when North and South Kashmir used to see militancy on daily basis incidents, this was pretty safe and pretty peaceful. And that's why this is disturbing, because probably even the security agencies would not have visualized that this area would be targeted. But there is a messaging in this, because these are 2 very critical tunnel projects that are happening. They are very important as far as national security is also concerned, because they will give all-weather connection to Ladakh. And we know post-Eastern Ladakh flare-up and the Chinese aggression, the kind of tensions that prevailed, there is an attempt to connect Ladakh through these tunnels and ensure a 24/7, 365 connectivity. And probably that could also be a case where that's why these workers have been targeted, because this attack could have happened anywhere else also. There are thousands of migrant laborers who come from Bihar and other parts to Kashmir every year, and they're scattered around. So why target construction workers of a yes, tunnel? Mir. I'll just come back to you in a moment from now. Mir getting in those details from Ganderbal. Jitendra Bahadur, my colleague, also joining in this morning with the very latest as far as the terror group here is concerned.
जितेंद्र, टीआरएफ चीफ शेख सजाद गुल के ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया है। क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे? एक लोकल मॉड्यूल है टीआरएफ का, उसे एक्टिव कराया क्या गया था? क्या डिटेल शेयर कर सकते हैं आप? देखिए, खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टीआरएफ जो कि द रेजिस्टेंट फ्रंट लश्कर तैयबा का ही ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है और ये लगातार जो है जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग में शामिल रहा है। खुफिया एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इन तमाम जो हमले हुए हैं पिछले कुछ दिनों पहले जो आरएसएस के एक मेंबर के ऊपर हमला हुआ था, इसके साथ ही जो कल हमला हुआ है ये काफी खतरनाक है और इसके पीछे द रेजिस्टेंट फ्रंट का जो लोकल मॉड्यूल है वो शामिल है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और इनको इंस्ट्रक्शंस जो है वो इसका जो मेन हेड है सज्जाद गुल, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। जितेंद्र गेटिंग अस दोस डिटेल्स। रविंद्र रैना इज इन फैक्ट स्पीकिंग। लेट्स टेक अ लिसन। में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में निर्दोष मजदूरों की, कारीगरों की जो हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, ये मानवता का कत्ल किया गया है, इंसानियत को तार तार किया गया है। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सेना तथा पुलिस ने पूरे सोनमर्ग क्षेत्र के घने जंगलों में कॉर्डन किया है। रात से ही सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये पाप कश्मीर के सोनमर्ग में किया है, उनको जल्द उनके पापों की और गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की हर कोशिश को, आतंकवादियों की हर कोशिश को हमने पहले भी विफल किया है। जितेंद्र ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी विद अस। इनफैक्ट जितेंद्र, आप बता रहे थे कि एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी भी देखा गया है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन ये एक्टिव है कश्मीर में, कश्मीरी पंडित, सिख्स और नॉन लोकल्स को टारगेट करती है। बिल्कुल एक तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश है जम्मू कश्मीर, खास तौर से घाटी रीजन में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि वहां पर जो चुनाव हुए वो चुनाव में इतना बढ़ चढ़ करके लोगों ने भाग लिया, नई सरकार बनी और उसके बाद आप देखिए कि जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसको निशाना बनाया गया और वहाँ जो श्रमिकों के कैंप थे उनके ऊपर हमला किया गया। तो इस तरीके से टारगेटेड किलिंग की कोशिश एक बार दोबारा से आतंकियों के द्वारा किया जा रहा है। और द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसको कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा चुका है, उसका जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से इस तरीके का हमला किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एजेंसियां जो हैं सभी मिल करके एक बड़ा ऑपरेशन इन आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में इस वक्त कर रही हैं। खुद गृह मंत्री ने कल सोशल मीडिया एक्ट पर जानकारी दिया और उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक कड़ी चेतावनी आतंकवादियों को दिया गया है। तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में इनके खिलाफ बड़े एक्शन किए जाएंगे और सभी सुरक्षा एजेंसियां कोऑर्डिनेटेड वे में काम लगातार कर रही हैं। 2 से 3 टेररिस्ट इस अटैक में इन्वॉल्व थे जितेंद्र बहादुर, और क्या बता सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में? देखिए, इस जो पूरा अटैक किया गया है उसमें 2 से 3 आतंकवादियों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने टारगेटेड वे में जो निर्माण कार्य चल रहा था जेड जंक्शन पर, वहां पर जाकर के इन लोगों ने हमला किया है और ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति साजिश के तहत इस तरीके का काम
आतंकवादियों के द्वारा किया गया है। माना जा रहा है कि इन लोगों ने कुछ दिन पहले रेकी भी उस जगह की थी और उसके बाद इस तरीके से हमला किया गया। इस बार उन्होंने लोकल्स और नॉन लोकल्स दोनों को निशाना बनाया है। एक तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है, जिसको की लेकर के सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट इस तरीके के आ रहे थे। पर जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया और टारगेटेड अटैक करके ये जताने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की सुरक्षा में सुरक्षा एजेंसियों का अपर हैंड है, वो उसमें खलल डालने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। और माना जा रहा है कि इस तरीके के अटैक्स और हो सकते हैं, एजेंसियों के पास इस तरीके के अलर्ट्स आ रहे हैं, पर सभी एजेंसियां मिल करके इनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन कर रही हैं। और खुद गृह मंत्री ने इस तरीके की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो तमाम एजेंसियां मिल करके इनके खिलाफ इस वक्त एक्शन में है और माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में इन लोगों के खिलाफ बड़े एक्शन और भी तेज किए जाएंगे। जुड़ने के लिए जितेंद्र बहादुर getting us those details. Also Mir Farid joining in from Ganderbal this morning on that horrific terror attack on migrant workers.